Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Welcome to this Wednesday's edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Vishal Sharma. नमस्कार, मार्केट मंत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। प्रतिदिन की तरह आज भी हम देश और दुनिया से आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार के ताजा समाचार आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा भी करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ आज कार्यक्रम में मौजूद हैं रूरल वॉइस के संपादक हरवीर सिंह। हरवीर जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत। नमस्कार, शुक्रिया। और सबसे पहले हेडलाइंस के साथ हैं अर्जुन चौधरी। Union Cabinet approves the strengthening of the cooperative movement in the country. Around 2 lakh agriculture and dairy cooperatives to be established in uncovered panchayats. Indian exports in the current financial year estimated to log growth of more than 17% and domestic stocks witnessed modest gains. Sensex closes above the 61,250 level. Nifty settles above the 18,000 mark. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए सहकारिता की पहुंच से बाहर पंचायतों में करीब 2 लाख कृषि और डेयरी सहकारी समितियों के गठन को मंजूरी दी। चालू वित्त वर्ष में देश के निर्यात में 17% से अधिक वृद्धि का अनुमान और घरेलू शेयर बाजारों में हल्की बढ़त। सेंसेक्स 61,250 के स्तर से ऊपर हुआ बंद। निफ्टी 18,000 के निशान से ऊपर पहुंचा। सबसे पहले बात केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने और जमीनी स्तर तक इसके लाभ पहुंचाने के लिए आज एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने संवाददाताओं को बताया कि अगले 5 वर्ष में सहकारिता की पहुंच से बाहर प्रत्येक पंचायत में 2 लाख बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण समितियों, डेयरी सहकारी समितियों और मत्स्य सहकारी समितियों का गठन किया जाएगा। श्री ठाकुर ने कहा कि इससे आवश्यक बुनियादी ढांचे की स्थापना और आधुनिकीकरण में भी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इससे सहकारी क्षेत्र में मजबूती आएगी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने में आसानी होगी। हरवीर जी, सबसे पहले बात इसकी करें हम, जो आज मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है सहकारिता आंदोलन के लिए आगे बढ़ाने के लिए। ये जो सहकारिता की पहुंच से बाहर जो प्रत्येक पंचायत में 2 लाख बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का गठन करने की जो बात की है, कितना महत्वपूर्ण निर्णय है और कितना दूरगामी इसके प्रभाव आप देख रहे हैं? असल में देखिए, जो ग्रामीण और कृषि अर्थव्यवस्था है, वहां पर अगर किसान एक साथ आएंगे या गैर किसान भी एक साथ आएंगे और सामूहिक रूप से कुछ भी अपना ऑर्गेनाइजेशन बना करके काम करेंगे तो उनकी बार्गेनिंग क्षमता बढ़ती है। साथ में वो अपने लिए वहां पर एसेट भी क्रिएट कर सकते हैं और वो जॉब क्रिएशन में भी काम आएगा। तो ये लगता है कि अभी जो गवर्नमेंट का फोकस यही है कि हमें इस क्षेत्र को जो है वो कोऑपरेटिव के जरिए मजबूत करना है और हमारे पास कोऑपरेटिव के बहुत अच्छे सक्सेस वाले मॉडल्स भी हैं जो कामयाब रहे और वो किसानों ने ही शुरू किया आपस में और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक वो संस्थान अपना कारोबार कर रहे हैं। तो ये जो एक फैक्टर है कि जो छोटे किसान हैं या जो छोटा पशुपालक है या छोटा जो मछली पालक किसान है, वो अपने प्रोड्यूस के लिए एक तो मान लिया उसे कुछ टेक्नोलॉजी चाहिए या सस्ती दरों पर संसाधन चाहिए। एक तो फैक्टर ये हो गया कि उसकी लागत को कम करने के लिए वो कैसे करेगा। अगर सामूहिक रूप से किसान खरीदेंगे किसी संगठन के जरिए, एफपीओ बनाए या कोऑपरेटिव बनाए, तो उनकी जो बार्गेनिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है क्योंकि वो वॉल्यूम में खरीदेंगे जी। तो एक तो उनकी लागत वहां घटेगी। फिर जब वो अपने प्रोड्यूस को लेकर के मार्केट में जाएंगे, एक छोटा किसान किसी के पास सरप्लस 1 टन है या 2 क्विंटल है, सो उसको शायद वो उस तरीके से मोल भाव न कर पाए अपनी उपज के लिए या अपनी उपज को उस बाजार में न ले जा पाए जहां उसको बेहतर दाम मिल सकता है।
वहां पर अगर किसानों का कलेक्टिव होगा, वो कोऑपरेटिव होगा, तो अगर मान लिया 200 किसान साथ में है या 100 किसान साथ में, तो उनके पास वॉल्यूम होगा, तो वो दूसरे बड़े मार्केट भी टैप कर सकते हैं। तो ये दोहरा फायदा किसानों के लिए है। और जाहिर सी बात है कि ये सारे जो कामकाज हैं, डेयरी है, मत्स्य पालन है और बाकी कृषि की जो गतिविधियां, वो ग्रामीण क्षेत्र में ही होती हैं। और अभी भी हमारी करीब 60% आबादी का जो आजीविका है वो ग्रामीण क्षेत्र पर निर्भर करती है। बाकी जो सेक्टर्स हैं वहां पर जो भी ग्रोथ आई है, लेकिन उसके बावजूद नए रोजगार के जो अवसर है, उनके सृजन करने की जितनी क्षमता कृषि और उसके सहयोगी क्षेत्र में है, वो अभी इंडस्ट्री में भी नहीं है। तो इसलिए इस तरह का कदम जो वहां पर एक ढांचा तैयार करेगा, इस तरह की संस्थाएं खड़ी करेगा, वो वाकई अच्छे परिणाम ला सकता है। Harveer, what about PACS, the Primary Agricultural Credit Society? Finance is a very important part for even this type of an effort, especially by farmers who are looking at the cooperative for production and marketing purposes. What type of credit line is expected to be given, and at what rate? Is there interest subvention? What is the size of the loan that can be advanced? Actually, primary agricultural cooperative societies played very important role in farm credit. And at one time, 40% of the farming credit was only through cooperative sector, whether PACS or cooperative banks. But in recent past, we have seen that the public sector banks and even private banks, the share of lending has gone up from their side. But farmers are member of these banks, so they are already authorized to get the credit, and through the refinancing system of NABARD, PACS gets financing and gives credit to the farmers because it is their own organization. So definitely cost remains low, and it is nearest to them, and they are owning to that. So if any profit also comes, it is also can be shared by them within themselves. What is the rate of interest? Rate of interest basically now, as we have seen basically this short-term credit crop loan, it is at 7% with interest subvention by central government, and if timely farmers pay, so another 3% interest subvention also farmers gets. So it's like that. But in terms of term credit, rates are different for these things. And the size of the loan, from what size of the loan depends on the farmers. Basically, there is a system for his capacity to repay. So financial evaluation, there is a criteria district wise based on the kind of crop farmers are growing and land holding size, and whether it is single crop holding or two crop holding, depends on that. The capacity of the farmer. Yes, capacity of the farmer. Like that. दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां जो हैं, उनके लिए तो हम देखते हैं कि देश में पूरी तरीके से दुग्ध संयंत्र हैं जहां पर कि दूध का कलेक्शन होता है और फिर उसको प्रोसेस किया जाता है। फिशरीज की जब बात आती है तो क्या इसके लिए भी पूरे देश भर में एक ढांचा तैयार किया जाएगा प्रसंस्करण के लिए? देखिए, एक तो मैं आपको बताऊं कि दूध में भी अभी जो हमारे देश में जो बहुत बड़ा इलाका ऐसा है जहां पर अभी जो दूध किसान है वो सहकारिता के जरिए कवर्ड नहीं है, और वहां पर उस तरीके की जो फैसिलिटी है ये मिल्क कलेक्शन की, चिलिंग प्लांट्स की और प्रोसेसिंग, वो नहीं है, और वो फिर अनऑर्गेनाइज सेक्टर के ऊपर डिपेंड करते हैं। हमारे टोटल डेयरी सेक्टर जो मिल्क प्रोडक्शन होता है उसका लगभग सिर्फ 20% ऑर्गेनाइज सेक्टर में जाता है, जिसमें कोऑपरेटिव और प्राइवेट सब मिला करके हैं, बाकी सारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जाता है। और जो ऑर्गेनाइज सेक्टर का जो रेट होता है, सपोज आज की हम बात करें तो कोऑपरेटिव्स और इवन प्राइवेट सेक्टर भी किसान को 55-56 रुपए तक पर लीटर किसान को दे रहे हैं, लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में उसको ये दाम नहीं मिलता या प्राइस फ्लक्चुएट होती है। सस्टेनेबिलिटी का इशू आ जाता है, क्योंकि जो कोऑपरेटिव है या उस ऑर्गेनाइज सेक्टर के जो लोग हैं उनका एक कंटिन्यूटी होती है। सवाल होता है कभी जब सरप्लस होता है तो वहां जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वहां प्राइस तेजी से क्रैश होता है जी। तो ये और कोऑपरेटिव है तो बिकॉज फार्मर्स आर ओनर,
तो उनको जो सिर्फ मिल्क की बात नहीं है, जो प्रोसेस प्रोडक्ट्स होते हैं, जो ओवरऑल अगर प्रॉफिट है तो उसमें फिर उनको शेयरिंग होती है इनकम की. सो इट्स लाइक दैट. एंड स्टिल वी हैव लार्ज एरियाज इन द कंट्री बिकॉज गुजरात इज डूइंग वेल, Maharashtra, Karnataka is doing well, even Bihar, some part of the Bihar and Kerala and Rajasthan. But even in UP, there is huge potential. Largest milk producer state. But we need a lot of infrastructures like cooperatives, organizational infrastructure, and get farmers to be part of that. So, एक तो ये, जैसे आपने मत्स्य पालन का कहा, एक तो जो हमारा जो ग्रोथ है, वो फिशरीज में और डेयरी में और हॉर्टिकल्चर में, वहां से अब ज्यादा आ रहा है. जो हमारे ट्रेडिशनल क्रॉप है, फूड ग्रेन का ये सब जो है, उनसे उतना अब ग्रोथ नहीं आ रहा है एग्रीकल्चर में. और इधर वैल्यू भी बढ़ रही है बिकॉज ये हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स हैं. तो यहाँ पर अभी फिशरीज का जैसे मैरीन एक्सपोर्ट बहुत बढ़ रहा है हमारा तेजी से, और इनलैंड फिशरीज में भी क्योंकि डिमांड बढ़ रही है, लोगों का जो फूड पैटर्न है वो चेंज हो रहा है. सो यू विल बी सरप्राइज स्टेट्स लाइक जैसे कि हरियाणा है, वहां बहुत इनलैंड फिशरीज का प्रोडक्शन हो गया. बिहार जैसा स्टेट, वहां पे इनलैंड फिशरीज के लिए पोटेंशियल भी बहुत है. पहले था कि जो ट्रेडिशनल पॉन्ड्स हैं, बड़े इस तरह के लेक्स हैं, वहां होगा, लेकिन फार्मर्स खुद के अपने पॉन्ड क्रिएट करके वहां कर रहे हैं क्योंकि उसमें वैल्यू है, इनकम है. सो इस तरह का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कोऑपरेटिव फॉर्मेशन का, वो उनको मदद करेगा बिकॉज जिससे उनका एक तो होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगा, उनको दाम बेहतर मिलेगा और उनका रिस्क मिटिगेट होगा. Well, let's have a look at the Vibrant Villages program story now. Union Cabinet has approved a centrally sponsored scheme, the Vibrant Villages program for the financial years 2022-23 to 2025-26, with financial allocation of 4,800 crore rupees. Briefing reporters after the cabinet meeting in New Delhi today, Information and Broadcasting Minister Anurag Singh Thakur said it will lead to infrastructure development and livelihood opportunities in 4 states and 1 union territory along the northern land border. These include Himachal Pradesh, Uttarakhand, Sikkim, Arunachal Pradesh and Union Territory of Ladakh. Mr. Thakur said this will improve the quality of life of the people as well as inclusive growth of villages on the northern border. Hari, what are the challenges in the northern border, in these northern states, the 4 and the Union Territory as well, in terms of not only traditional agriculture, animal husbandry, but fisheries also? I believe that the strategy has been formed on the basis of water bodies there. Actually, you see, if you see all these states and border villages, they are very difficult terrain, and these areas are not very well connected to the markets. So, to earn a livelihood is a challenge there. And I think this kind of program will basically arrest the migration from these villages. Out-migration. Out-migration, basically. So, if they will get opportunity to earn better livelihood and better earning for themselves, so they will remain there. And the kind of investment government is going to make in these villages will basically create better infrastructure, whether it is related to agricultural production or allied sector or connectivity to the markets or basically all kind of infrastructure. Whether it's not necessarily just road and all these things, but maybe some godowns, some processing units, some transportation facilities, or some specialized controlled temperature godown system like that, and definitely a modern infrastructure like IT connect, this information technology and net connectivity, because all these things are very important now, and education, that kind of thing. What about roadways? Yeah, that's right. Because and I think in recent past we have done a lot, particularly on road infrastructure in the border areas with big investment and all. Let's move on to our next story. India's overall exports in the current financial year during April to January is estimated to exhibit a positive growth of 17.33% over the same period last year. The Commerce and Industry Ministry said
The merchandise exports for April to January 2022-23 were over $369 billion as against over $340 billion during the same period last financial year. The ministry said the country's overall exports in January this year is also estimated to be over $65 billion, exhibiting a positive growth of over 14% over the same period last year. All agricultural commodity exports, barring coffee, have shown positive growth. Exports of electronic goods have also increased by more than 50% during January this year. How do you see the current developments promoting exports of agricultural commodities, whether in raw material form or processed or finished goods? Yes, recent data shows that there will be definitely a growth in agricultural exports and allied, and we have the record of $50 billion for last fiscal, and I think as per my estimate and information that we are going to cross that $50 billion export in the current fiscal, based on the data available till December, like that. And because global market is favorable to us, that allowed us to export more, like we are exporting sugar, and I think this year also will export around 6 million ton of sugar. Rice, basmati rice has seen almost 40% growth in that, and processed food also we have seen. So a lot of things depend, because the global market prices for food items were high. We have seen since even before Ukraine-Russian conflict, we have seen a surge in the prices, and food price index of FAO reached at a very peak level, but now that is going down. So, and but still there is potential, and I think all these agricultural commodities, despite because our non-basmati rice we have restricted due to price rise in the country, and wheat also. But as per data, wheat export is still high compared to last year, but we have to see next few months. So we got very good opportunity in the international market due to higher prices in the world. What about the role of corporates in the agro-economy leading to higher exports, Habir? No, actually agricultural export is going through the corporate only, and maybe some cooperative organizations also do some export, like marine big corporates exports, and we are exporting on dairy products, and all these rice and wheat and cotton and meat, all these exports are through big corporates. जी, और अब बात करते हैं शेयर बाजार की। घरेलू शेयर बाजारों में आज हल्की बढ़त दर्ज हुई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 61,250 के स्तर से ऊपर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 18,000 के निशान से ऊपर पहुंच गया। सेंसेक्स 0.4% की वृद्धि से 243 अंक चढ़कर 61,275 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 0.48% की तेजी से 86 अंक चढ़कर 18,016 पर पहुंच गया। व्यापक बाजार में बीएसई मिड कैप इंडेक्स 0.69% और स्मॉल कैप इंडेक्स 0.36% लाभ में रहे। And Sensex Nifty today witnessed modest gains. The index of the top 30 companies at the BSE ended above the 61,250 level. The index of the top 50 companies at the NSE closed above the 18,000 mark. Both the stock indices rose amid mixed global cues. Sensex climbed by 243 points or 0.4% to finish at 61,275. Nifty 50 also surged by 86 points or 0.48% to settle at 18,016. In the broader market at the BSE, the mid-cap index rose at 0.69% and the small-cap index added 0.36%. In the Sensex pack, 20 companies posted gains while 10 witnessed losses. Tech Mahindra was the top gainer as it rose by 5.8%, followed by Reliance, which gained 2.2%. Bajaj Financial Services added 1.4% and Bharti Airtel ended 1.2% up. On the other hand, Hindustan Unilever slipped 1.2%, ITC and Sun Pharma both declined 1.1% each. Larsen & Toubro lost 0.6%. In sectoral indices at the BSE, 15 sectors posted gains, while 5 logged losses. Realty and Telecom both indices gained 1.3% each. Auto sector rose 1.1% and IT index added 1%. On the other side, power sector declined at 0.7% and utilities index fell 0.5%.
Capital goods and financial, both sectors slipped 0.4% each. The overall breadth of the BSE trade was negative as shares of 1,707 companies gained while 1,774 companies fell. Shares of 121 companies remained unchanged. Briefly, Harveer, what is the outlook for the FMCG companies? The Nifty index fell by about 180 points today, but they seem to be doing quite well in terms of their market reach. No, actually, in case of FMCG, despite we have good harvest of Kharif and Rabi prospects are also good from rural area, but high value products I think is not getting very good demand from the rural area, and even big FMCG company admitted that still demand is not increasing like that in rural area. We have to see that, but from urban it is coming. So I think this is the reflection, maybe due to some assessment by these corporates, those who are producing and selling FMCG products. But I think now it should improve, in my opinion. And briefly about the Sensex, it went up by 243 points today. The market has been bouncing back despite the headwinds that we are seeing globally and in the domestic market. The market is still resilient. There are plenty of buyers in the market. Yeah, actually some foreign buyer also returned in the Indian market. That is also one of the reason. And you are right that despite all these headwinds, but we have to see that again inflation is going up in US and number is not very good. So that's why it will depend that this inflow from FIs and FPI will remain continue or not. So it will depend on that. जी, रियलिटी सेक्टर आज टॉप गेनर रहा है 1.3% की आज इसमें हम तेजी देख रहे हैं. मौजूदा जो परिदृश्य है उसमें रियलिटी सेक्टर में आप क्या संभावनाएं देख रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से रियलिटी सेक्टर में पीछे डिमांड निकली है और एक बहुत सारा कुछ इश्यूज रहे हैं सेक्टर के साथ, उसमें जो अच्छे प्लेयर हैं वो अब आगे आ रहे हैं. बट दूसरा पॉइंट ये भी है कि जो जिस तरह से इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं और अभी रिसेंटली आरबीआई ने फिक्स पॉलिसी रेट पे चेंज किया है एंड होम लोन इंटरेस्ट रेट ऑलमोस्ट नाउ क्रॉस्ड 9%, 9.5 एंड इवन अराउंड दैट, एंड आफ्टर दिस इंक्रीज देयर इज अगेन ए प्रेशर ऑन दैट. सो ये जो है जो नए बायर हैं उनको शायद थोड़ा सा मुश्किल होगा, और इवन जो एग्जिस्टिंग लोग भी हैं वो ज्यादा जो आउटगो होगा उनका इंटरेस्ट की वजह से. आई थिंक दिस इज अ नेगेटिव फैक्टर फॉर द रियल एस्टेट सेक्टर, खासतौर पर अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए. अफोर्डेबल हाउसिंग में गवर्नमेंट का काफी एक उसमें सपोर्ट भी है, एक तरीके का इंटरसवेंशन है, तो वो चीजें हैं, बट मिडिल लेवल के लिए थोड़ा सा मुश्किल है. And what is your advice for small investors? Tomorrow is the expiry of the weekly F&O, that is in the options, futures and options market. What would you advise small investors who are trading in the cash market right now? Because looking at the FII, DII data, they both were net buyers in the market, but in terms of the amount of trade, in terms of its value, it was less than 600 crore rupees in terms of net buying. So what would you advise small investors? I think our first advice for small investors always remain, they should stick to this SIP route or mutual fund route. And now you see that deposits are very attractive now. For senior citizen, it has already reached 7.75%. So they have to weigh the gain or the potential in the market. Based on that, they should take a call. Let's have a look at how the Asian markets perform now, Vishal. जी अर्जुन, एशियाई शेयर बाजार की बात करें तो आज एशियाई शेयर बाजार नुकसान में रहे हैं. दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 1.6% की गिरावट दर्ज हुई. हांगकांग का हैंगसेंग 1.5% लुढ़क गया और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स 1.1% की गिरावट के साथ बंद हुआ. जापान का निकेई और चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स दोनों 0.4% के नुकसान के साथ बंद हुए. यूरोपीय शेयर बाजारों में दिन के कारोबार में मिला जुला रुख देखा गया. जर्मनी का डेक्स 0.4% और फ्रांस का कैक 1.1% की बढ़त में चल रहे थे. लंदन का FTSE 100 बिना किसी उतार चढ़ाव के सपाट कारोबार कर रहा था.
Moving on to the U.S. Market, U.S. stock indices ended mixed yesterday after U.S. consumer price data for January. The consumer price data offered little to change expectations about the Fed Reserve's path forward on interest rate hikes. The Dow Jones Industrial Average fell 0.5%. The S&P 500 was trading flat, while the Nasdaq Composite Index rose 0.6%. What's your take on the U.S. market, especially when you look at how the U.S. dollar index, which is at 104 level right now, how do you see the U.S. economy vis-a-vis its currency and in terms of trade and business with the rest of the world? No, if you see that U.S. economy is doing reasonably well, and it is being reflected through these waves rising and all, but at the same time inflation is also increasing. So you see the major there was a trend even today to other currencies were weakening against dollar. So I think that is a point for them. Plus they're offering high bond yields on the treasury securities as well. That's why that investors are seeing opportunity there. जी, एशियाई शेयर बाजारों में आज अच्छी खासी गिरावट देखी गई है. क्या प्रमुख कारण आप देख रहे हैं इसके पीछे? मुझे लगता है ये जो ग्लोबल रीजन है इसका जो हमें एक इंडिकेशन मिला, खासतौर से अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं यूएस का जो इन्फ्लेशन वहां पर बढ़ी है. हालांकि यूरोपियन मार्केट में थोड़ा ये इन्फ्लेशन को थोड़ा राहत उन लोगों को मिली है, बट दीज आर टू मेजर ब्लॉक्स ऑफ इकोनॉमी इन द वर्ल्ड. तो अदरवाइज कोई मेजर चेंज या कोई ऐसा कोई पॉइंट्स आज मार्केट में नहीं था. Let's have a look at the oil market now. Oil today dropped for a second day as an industry report pointed to ample supplies in the U.S. and expectations of further interest rate hikes sparked concern over fuel demand and the economic outlook. In intraday trade, crude prices fell more than 0.5%. Brent crude was trading at $85.15 per barrel, while WTI crude was at $78.60 per barrel. Looking at the global procurement of crude, especially from the spot market, how is India faring, especially by diversifying its buying, both the Russian crude and Western crude as well? I think in case of this crude buying, India is playing its card very well, because our import from Russia has reached a very high level, and because that is economically beneficial to us, price is very attractive. So that's why despite some increase in recent past, I think our cost to this import of energy remained low, only due to that, and we have ample supply for that. Are we procuring at sub $50 per barrel? Actually, to go to the price is very difficult to, because deals are big and not disclosed like that openly. Let's have a look at the precious metals market now. कीमती धातुओं की बात करें अर्जुन, तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अप्रैल अनुबंध वाला सोना आज 560 रुपए सस्ता होकर 56,190 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था. मार्च अनुबंध वाली चांदी 850 रुपए टूटकर 65,400 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर कारोबार कर रही थी. उधर न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना मंदी के साथ $1,846.70 प्रति औंस, जबकि चांदी $21.50 प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी. हरवीर जी, सोना एक अभी हम देख रहे थे कि 59,000 और 60,000 रुपए के स्तर पर पहुंचता दिखाई दे रहा था. अब ये हम इसको पीछे गिरावट का थोड़ा सा दौर देख रहे हैं. एक्चुअली ये जो बड़ी इकोनॉमी थी उनमें जो रिसेशन को लेकर के जो चिंताएं आ रही थी, वो एक बड़ा रीजन था गोल्ड में. अगर जो स्पाइक हम पिछले कुछ दिनों में जब देखें, जब ये ऊपर जा रहा था, लगता है वो चीजें ईज हो रही हैं, इसलिए ये इंटरनेशनल मार्केट में जाहिर सी बात है दाम गिर रहा है. हमारे यहाँ भी रिफ्लेक्शन उस तरीके का है. अभी कोई मेजर डिमांड उस तरह की है भी नहीं. तो आई थिंक इट इज ये ट्रेड का जो लेवल है, जो इंटरेस्ट है इन्वेस्टमेंट के और टू एग्जिट फ्रॉम दैट इट्स अराउंड. दुनिया भर के जो केंद्रीय बैंक जो खरीद रहे हैं सोना, उसकी भी कोई भूमिका है इसमें? नहीं, उसी की वजह से, बिकॉज बड़े बाहर तो वही है. देखिए, अगेन आई एम टेलिंग, जब ये रिसेशनरी ट्रेंड का या इस तरह की बात आती तो जो सेंट्रल बैंक्स ने जब भी खरीदा है, क्योंकि उसी के वक्त इतनी बड़ा स्पाइक आता है. अदरवाइज हमने देखा है कि बहुत महीनों तक, बल्कि साल से ज्यादा गोल्ड वाज मूविंग अराउंड 50 और सो, even less than that. But silver has really spiked even in the domestic market. Very briefly. I think it is maybe some demand for silver from industry or so. Otherwise, not a big deal. Well, thank you so much, Harveer Singh, for being with us on Market Mantra and giving us valuable views
on the market performance today. Thank you very much. Well, before we close, a reminder of the headlines. The Union Cabinet approves strengthening of the cooperative movement in the country. Around 2 lakh agriculture and dairy cooperatives to be established in uncovered panchayats. Indian exports in the current financial year estimated to log growth of more than 17%, and domestic stock indices witnessed modest gains. Sensex closes above the 61,250 level. Nifty settles above the 18,000 mark. And that's it in this edition of Market Mantra for now. Goodbye. Namaskar. Market Mantra.